Hello everyone, I am Navajot Kumar and I will be teaching you today the motion in one dimension. Okay, this is an important topic of the NEET syllabus. So let's start with this. From motion in one dimension, you will be getting like one or two questions every year. They have asked in the questions, and here basically we are dealing with the motion without the cause. Okay, and first we will discuss the motion parameters. Like, let's say these are the motion parameters. Motion parameters. Okay, the first one you are all aware with is the distance and displacement. And displacement, let's have a quick relook at these two things. What is the distance and what is the displacement? So see, if there are two positions, let's say this is position A and this is position B. So there are infinite ways possible to go from position A to position B. Someone can go like this, or someone can go like this. Okay, infinite way possible to go from here to here, right? But there is only one way possible. There is only one way possible, that is the shortest of all, right? Which will be a straight line joining these two positions. This one. The shortest path is called the displacement. So I can simply write here, displacement is what? Shortest path length. Shortest path length. Okay, this is the displacement, and displacement distance is what? Actual path length traveled. Okay, actual path length traveled. Got it? So the distance is actual path length traveled, and the shortest path length is called the displacement. So from here we can conclude that the displacement, that is the magnitude of this displacement, will be less than, the magnitude of it will be less than or equal to the distance. Okay. One more thing to keep in mind is that the direction of displacement, since it is a vector quantity, so its direction will be always from initial position to final position. So here in this case, this is my initial position. And this is my final position. Understood? So what we can write here is that the second point, direction of displacement will be from initial position to final position. Understood? Okay. So the direction of displacement will always be from initial position to final position. That you have to keep in mind. Okay. These things are like distance is a scalar quantity, so it will always be positive. Displacement is a vector quantity, so it may be positive, negative, or zero. Okay. And to calculate the displacement, we use the formula, that is what? Final position minus initial position.
Understood? So in this way, we can calculate the displacement, whether it is for one-dimensional motion or two-dimensional motion. So we will see that in the when we will be discussing the motion in two dimensions. So how we can calculate the displacement in a plane. But here, since it is a motion in one dimension, so you can simply subtract the initial position of the particle from the final position. Okay, fine. Let's move to the other parameters. The second one, that is speed. So speed is what? It is the total distance traveled per unit time. It is what? Total distance traveled per unit time. Total distance traveled per unit time. This is called the speed. Okay, now we have the average speed or instantaneous speed. Okay, so average speed is defined for the whole duration of the journey. Okay, average speed is defined for the whole duration of the journey. Average speed, and it is defined for the total duration of journey. So we write like this: total distance over total time. Okay, total distance over total time taken. Total time taken. Got it? This is the average speed. Now, in this, you will be asked certain questions like, suppose if a particle is traveling resist a certain distance with, let's say, a speed as v1 and v2 for the time interval t1 and t2. So what will be the average speed in this case? Such type of questions are asked in this topic. Okay, they have asked it several times. So we can see that. Let's say I'm changing the pane, just wait for a second. Okay. So let's say a particle moves with a speed v1 for time t1 and with a speed v2 for time t2 then average speed will be, okay, this we have to find. So in this case, just remember that the average speed is total distance over total time taken. So here we are given the speed for time interval t1 and a speed for time interval t2. So we have to calculate distance, and distance is what? The speed multiplied by time. So write like that. Okay, so this will be what? v1 t1 for the first time interval, and the second distance covered in the second time interval will be v2 upon t2, and we have the total time interval, that is t1 plus t2. That's it. So in this way we can calculate the average speed. Now here they can give you that if time intervals are equal, like say if t1 is equal to t2. Okay, so if time intervals are equal, then you can simply write like this: v average will be equal to what? If t1 and t2 is equal, then you can take it out common and that will cancel. So it will simply be then em of the v1 plus v2. That's the arithmetic mean. That's it. Okay. So they have asked question from this topic. So please be aware of that. Okay. Let me change the slide. Now suppose in the same, now you are given that, let's say a particle covers s1 distance with a speed v1 and next s2 distance with a speed v2
then the average speed will be, then average speed will be, okay. Now we have to calculate. So here we are given the distances now, okay. So let's say V average here will be equal to what? Distance. Total distance will be what? S1 plus S2, right? Now we have to write a time interval, but here we are given the distances and the speed. So we know the time is what? Distance over the speed. So write like that, S1 over V1 plus S2 over V2, okay. This is my average speed here. Now here, suppose if the distances are equal, okay, if the particle cover the journey in two equal distances with different speeds, okay. So what will happen in that case? I'm writing here, if S1 is equal to S2, okay, if the distances are equal but obviously the speeds are different, then what will happen? Then the V average will equal to what? Twice V1 V2 over V1 plus V2, okay. So these two are the important formulas that you should keep in mind. From here they have asked the questions in the past. Got it? Fine. So now let's talk about the velocity and the instantaneous speed. Okay, just for a second, let's discuss the instantaneous speed too here. So for instantaneous speed, now thing is that the instantaneous speed is called the time rate of change of distance, okay, is instantaneous. And we generally define it that the speed at any particular instant. Now the first problem is here is that until and unless there is a time interval, there will be no distance traveled, and if there is no distance traveled, there will be no speed, correct? So for that, what we generally do, V instantaneous, if it's what we can write here is that instantaneous speed, let's say this is V instantaneous. This we can write like this, limit delta t tends to 0, and this is the total distance traveled, delta x over delta t. Okay, here delta x what? Total distance traveled, total distance traveled in delta t, okay. And then obviously this is a differential form, so you can write like this, let's say dx over dt, okay. So this is the way to calculate the instantaneous speed. Just keep in mind that it is called instantaneous because delta t is very small, that's why, okay. It is fine, and generally when we ask about the speed, our meaning is the instantaneous one, not the average one. The average one is defined for the total duration of the journey, correct? Now let's talk about the velocity, okay. Velocity. So the same way we can define the velocity also. So let's talk about first the average velocity. Average velocity. And average velocity is what? It is total displacement over time, okay? Total displacement over total time taken. That is called the average velocity. So these are you are very familiar with total displacement over time interval. Now, since this is a vector quantity, so obviously we have to take care of the direction too. So direction of average velocity is in the direction of displacement. Okay. So direction of average velocity is same as direction of
displacement. Okay, displacement during the given interval of time. Okay, during the given interval of time. During the given interval of time. Fine. Now the acceleration. Okay, instantaneous velocity. Instantaneous. Let's discuss instantaneous one. Okay. An instantaneous velocity is defined as the time rate of change of displacement, just like we have defined it earlier. So we can write like this. It is called the rate of change of displacement. Fine, rate of change of displacement. This is the instantaneous velocity. And if we have to write like this, we can write like this again. V instantaneous, I'm writing in the vector form. This will be equal to what? Limit delta t tends to 0. And this you can write like this again, delta x, the vector form now, over delta t. And this will equal to what? Dx vector upon dt, where dx is my displacement. Okay. So this is the difference. It is a vector form, and the speed is just a scalar quantity. Okay. Fine. And for two-dimensional motion, obviously we can change, calculate it with the rate of change of position vector 2. Okay. So that we will see later in the subsequent classes. Fine. Now let's talk about the acceleration. Okay. Let's have a quick look at acceleration. Okay. So when a particle travels with non-uniform velocity, then the motion is called accelerated motion. This you all know. And since velocity is a vector quantity, thus it can be changed either by changing the magnitude of the velocity or by changing the direction of the velocity. Okay, if either of them will change, it will be called accelerated motion. Okay, so this, it may be possible that the particle will have a non-zero acceleration but a constant speed, just like uniform circular motion that we'll see in that motion in two dimension. So what we can write here is that for acceleration, when the particle is moving with non-uniform velocity, it is called the change in velocity. Change in velocity per unit time. Okay, this is what? Change in velocity per unit time. Please remember, acceleration is change in velocity per unit time. Sometimes students do the mistake. Okay, and if you want to calculate the average acceleration, then the same thing you can go for it. A average, it will be equal to what? Change in velocity upon delta t, and instantaneous form, just differentiate the velocity. A instantaneous, this will be dv upon dt, just like the previous cases. Okay, ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, स्पीड वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है. ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन से आते हैं या सिंपल क्वेश्चन से, जैसे एवरेज स्पीड वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द इक्वेशंस ऑफ मोशन. Equations of motion. I will have a quick relook of those and then we will switch to the questions. Equations of motion. Okay, so there are three equations of motion. The first one,
we all are aware with. We have studied this in class 9th too. That is v is equal to u plus at. Yeah, the famous equations. V is equal to u plus at. Okay. The second equation that we will discuss is what we know is that S is equal to ut plus half at square. यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो S है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है ना। कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि उसको डिस्टेंस समझ लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन के लिए तो ये चल जाएगा क्योंकि आंसर सही आता है। ठीक है, बट क्या होगा जब मान लीजिए कि पार्टिकल टर्न ले रहा है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो यस है वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि डिस्टेंस होता है। करेक्ट, फाइन। The third equation that we know is equal to what? V square is equal to what? U square plus twice AS. Okay, this is the third equations of motion, and we'll discuss some more. That is the fourth one. Okay, displacement can also be written like this: S is equal to what? Initial velocity plus final velocity over 2 into time. This is just the average velocity. If you will, this is just the average. As you can see, this is what? Initial velocity plus final velocity over time. So this is just the average velocity, sorry, by 2. This is the average into time. That will give you the displacement 2. Okay, and एक और इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, लाइक थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड में कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का, तो s nth लिख लेते हैं, एंड ये होगा u plus a by 2 into 2n minus 1. ओके, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जब हम निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है u plus a by 2 into 2n minus 1. ठीक है, तो ये तो हमारे सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गए। एक नोट में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, एक्चुअली आगे लिख लेते हैं, है ना, ये शॉर्टकट की तरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या है ये कि if a particle starts from rest then ratio of its distances covered in equal intervals of time is, ठीक है, और ये होगा S1 is equal to S2 is equal to S3, ठीक है, S4 and so on, और ये बराबर होता है 1:3:5:7:. ये ऑड रेशियो में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई नल है ना, वहां से वाटर ड्रॉप जो है वो निकल रहा है इक्वल इंटरवल्स पे, तो वो सब्सिक्वेंट लाइक थर्ड ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप, इन सब का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो गई। अब थोड़ा ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ग्राफ से भी आता है, तो जल्दी से हम इसको भी फिनिश कर लेते हैं। ग्राफ्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान ये रखना है पहला, ठीक है, कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना, जब भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया वेलोसिटी को, तो वो हमने लिखा था ds/dt। ठीक है, और वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे,
slope of displacement time graph और ये क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको ऐसा लिख लेते हैं क्योंकि ये होगा क्या, ये ds/dt होता है। इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं और ये हमें क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा। ठीक है, करेक्ट। दूसरी चीज क्या है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये क्या हो जाएगा, dv/dt और ये हमें एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, कैसे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, ds/dt लिखते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाई यहाँ से ds क्या हो जाएगा, vdt हो जाएगा और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं t1 टाइम इंटरवल से लेकर के t2 टाइम इंटरवल तक। ये हो जाएगा s1 से लेकर के s2 तक। और ऐसा कीजिए, इसको 0 से s कर लीजिए। ठीक है, वो ज्यादा सुटेबल है, 0 से s। और फर्दर जब हम इसको लिखेंगे देयरफॉर यहाँ से, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, स्पेस नहीं है। तो देयरफॉर s इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन t1 से t2 vdt, है ना। और ये बेसिकली क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है जो कि एरिया अंडर vt कर्व देता है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ होगा, है ना, उससे जब डिस्प्लेसमेंट आए उसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि डायरेक्शन की भी बात है, तो उसको पॉजिटिव लेना है। और टाइम एक्सिस के नीचे का जो ग्राफ है उसको क्या करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम एक्सिस के ऊपर का ग्राफ है उसका जब हम एरिया निकालें तो उसको पॉजिटिव करें, और जो टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया है उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, दूसरा, जैसे ग्राफ्स एक जनरल हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्राफ मिलेगा आपको, है ना, थोड़ा सा 2 मिनट और इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसको समझ में आ जाए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी उसी हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही ले लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, जो एसटी ग्राफ, इसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए, अब जैसे इस ग्राफ को देखिए। ओके, so this graph here, as you can see here, the slope is constant. Okay, here the slope is constant, so velocity will be constant. And as you can see, this graph is above the time axis, so it is for moving in the positive direction. As the displacement is increasing, the velocity is also increasing, so it is a motion is happening in the same direction. Okay, and here the v is constant. Okay, so you can see this is the graph for uniform motion. क्या ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी एक दो और ग्राफ हम देखते हैं, आप इसी तरीके से सबको एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, ये एस है और ये टी है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट तो है,
ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, बट ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल में स्लोप क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, और वेलोसिटी आप यहाँ देख रहे हैं, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। तो ये वैसा सिचुएशन हुआ जब मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हैं, और जब स्कूल नजदीक आता है तो बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है और धीरे धीरे क्या होती है, स्पीड डिक्रीज होती है। ठीक है, ऑब्वियसली ये बात है, अब स्कूल की तरफ ही जा रहे हो तो यू आर मूविंग टू द स्कूल ओनली, बट यस the velocity slows down and ultimately stops. So here you can see here in this graph, okay, so the same thing is there, right? The displacement is decreasing. The displacement, okay, so the displacement is decreasing means what? When you are coming from your school to your home, obviously the displacement is decreasing, right? So I'm just writing it here, displacement decreases with time. Okay, ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी स्लोप्स भी आप देख सकते हैं ना। फटाफट दो चार और ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, आप यहीं पे देख लीजिए। मान लीजिए ये ग्राफ ले लेते हैं, एसटी ग्राफ, और यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे अगर हम दो पोजीशंस को कंसीडर करेंगे, मान लीजिए ये पोजीशन हमारा 1 है और एक और पोजीशन ले लीजिए, ये हमारा पोजीशन 2 है। ठीक है, चेक कैसे करना है, दोनों ही जगह पे आप स्लोप डालिए। ठीक है, अगर यहाँ पे स्लोप डालेंगे तो ये एंगल आप देख लीजिए θ2, और यहाँ पे अगर हम स्लोप डालेंगे तो टैंजेंट, तो ये θ1। अब यहाँ पे देखिए जो θ1 है ये छोटा है θ2 से। ठीक है ना, और सो tan θ1 क्या हो जाएगा, लेस देन tan θ2। इसका मतलब स्लोप क्या है, स्लोप पहले कम है बाद में ज्यादा है, और ऐसा केस होगा तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई v2 इज ग्रेटर देन v1, और ये केस है तो ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्या है ये, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो जैसा भी ग्राफ मिले, जब भी जैसा भी ग्राफ मिले, आपको क्या करना है, बस ये चीजें एनालाइज करनी है कि किसका ग्राफ है। ठीक है, अभी एक दो और देख लीजिए। ठीक है, ये ग्राफ देख लीजिए एसटी ऐसा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है ना, स्लोप कम हो रहा है। जैसे ये पोजीशन 1 है, ठीक है, और ये पोजीशन 2 है, मान लेते हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पे अगर आप सेम मेथड लगाएंगे ना तो स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगा। तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव तो है एंड डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही, वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग यानी कि सेम डायरेक्शन में है, बट डिक्रीजिंग है तो रिटार्डेशन का केस हो गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब जैसे ये ग्राफ देख लीजिए, एक और ले लेते हैं। ये चारों ग्राफ्स का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मोशन में यही चार ग्राफ यूज होते हैं। Just take care of that. Okay, now let's say this case is there. Okay, so for this case, can you tell me what will be the situation here? So here, as you can see, if now I will take the slope, what will happen? This is just like to this case. Okay, now the motion is happening in the reverse direction. Okay, what reverse direction means? Suppose here, from here to here, or let's talk about this, a ball case. Suppose a person has thrown the ball with certain speed, so it will go to the certain height. After that, its velocity becomes 0 and it again come back to its initial position. Here, let's say this is u, and here the final velocity will be 0, and then it can reverse back, because why? The acceleration is always in the negative direction. Okay,
तो ये वही वाला केस है, क्या है, वेलोसिटी अब इंक्रीज हो रही है बट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन है ना। आप यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, है ना। पार्टिकल वापस अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। और दूसरा केस एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला केस देखिए, एसटी ग्राफ जो है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग स्लोप है, आप स्लोप मेजर करके देखिएगा। ऑब्ट्यूज एंगल के केस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीजिंग है एंड नेगेटिव है। मान, इसका मतलब क्या हुआ, आपका घर आ गया है और बस रुकने वाली है, ठीक है। तो आपका घर आ गया और बस रुकने वाली है, ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, है ना। इसका ध्यान रखना। तो यही चार ग्राफ मोशन में यूज होगा, सब जगह यही चार ग्राफ यूज होगा, आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो हो गया सारे ग्राफ्स की बात, ठीक है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक दो चीजें और है जिसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वर्टिकल मोशन का, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो विल टेक टू केसेस हियर। केस वन, व्हाट इज केस वन, when a ball is thrown vertically upward, when let's say this person has thrown a ball vertically upward with certain velocity, let's say this velocity here is u, obviously the ball will go to a certain height and it will again come back to its initial position, okay. And at this position the final velocity will be 0. This height is called the maximum height, okay. This height will call as the maximum height. Let's say it is h, okay. And the time here is t is equal to 0 and the time here will be t is equal to t, okay. So you will be asked two questions here. What is the maximum height and what is the time to reach the maximum height, okay. So the h will be what, you can just use the third equation of motion. आप तीसरा equation जो motion का है v square equal to u square plus twice as, उसको यूज कीजिए। एक्सेलरेशन सबको पता है ना, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये केवल साइन माइनस साइन जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जो h की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर ओवर 2g। और अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे कि जो समय है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना लगा है, तो वो हम लिख सकते हैं ये u ओवर g होगा, ठीक है। और दूसरा केस जो पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी h हाइट के टावर से हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। तो दोनों ही केस हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये h हाइट का एक टावर है, ठीक है, इसका हाइट h है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा था, उसने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी जब बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगा v। तो इसमें यही दो केसेस पूछा जाएगा कि किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करता है और जो टाइम है वो कितना लगेगा, ठीक है। ये केसेस हम प्रोजेक्टाइल में भी यूज करेंगे सिमिलरली, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेम केस हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे भी ऑब्वियसली है, ये वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन जी ही होगा, ठीक है। तो जो टाइम होता है इस केस में वो हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस h ओवर g, ओके। और जो वेलोसिटी होगी
वो हो जाएगा √2GH। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस यही कुछ फॉर्मूला है जिसका ध्यान रखना है और बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, बहुत आसान आसान होता है। बेसिक्स हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, बस एक नोट हम लास्ट में लिख देंगे, एक स्लाइड में ऐड करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम क्वेश्चन को मूव करेंगे। ठीक, ठीक है, तो एक नोट हम बस लिखेंगे यहाँ पे। वो नोट क्या है, आप इसको शॉर्टकट मान सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी को हम वर्टिकली थ्रोन करते हैं अपवर्ड, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट t टाइम पे पहुंचता है, द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट इन टाइम t, a body thrown vertically upward reaches its maximum height in time t, then the body will be at a height h जो कि लेस देन है मैक्सिमम हाइट से, at two instants, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, at two instants। और उसका जो टाइम हम लिख सकते हैं वो आप ऐसा लिख लीजिए, t इक्वल टू क्या होगा, t प्लस माइनस √t² - 2h/g। ठीक है, तो एक बार जाते समय आएगा और एक बार आते समय आएगा। तो जाते समय वाला तो t माइनस वाला केस हो जाएगा, t माइनस √t² - 2h/g, और आते समय का केस क्या हो जाएगा, t प्लस √t² - 2h/g। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए, अगर ऐसा मान लीजिए कि t1 + t2 अगर 2t है ना, तो वो अगर डबल है टाइम में का, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है मैक्सिमम हाइट का, अगर हम लिख सकते हैं कि इफ, ठीक है, इस केस को देख लीजिए, इफ t1 + t2 है ना, इसका जो 2t, ठीक है, तो जनरली इसको ध्यान रखना है कि जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो t1 + t2 इसको 2t हो जाएगा। एंड अब इसको ऐसा लिख लीजिए, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और t1 × t2 जो होगा वो 2h/g हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे स्पेशल केस पूछा जाता है कि अगर हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कितने में पहुंचता है, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ये पहला नोट डाल लीजिए, और दूसरा नोट ये लिखना है कि अगर h = h/2 है, ठीक है, तो जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, t1 ± 1/√2। ठीक है, इसका ध्यान रखना, जहाँ पे h क्या है ना, मैक्सिमम हाइट, h क्या है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्लियर? तो ये सारा डिस्कशन हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें है नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो हम हमेशा लिखते ही हैं, जो है वो क्या होता है, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन जहाँ पे हम करेंगे वहीं पे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो अलग से उसको करने की आवश्यकता है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीट 2020 में पूछा गया था, और इसमें ये पूछा गया था कि a person sitting in the ground floor of a building notices through the window that जो विंडो का हाइट कितना दे रखा है, 1.5 मीटर है। A ball dropped from the roof of the building crosses the window is 0.1 सेकंड। ठीक है, तो 1.5 मीटर को क्रॉस करने में बॉल को 0.1 सेकंड लगता है। तो आपको वेलोसिटी बतानी है बॉल की, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट को, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो डेल्टा एक्स हमारे पास दिया गया है, ये 1.5 मीटर है, और टाइम हमारे पास दिया गया है डेल्टा टी, वो क्या है 0.1 सेकेंड है, और हमें क्या बताना है, यू बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लगा दीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जी की वैल्यू को 10 लेनी है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पुट कर दीजिए वैल्यूज और आंसर है ना। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, सारे मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर लिखते हैं फटाफट। ठीक है, 1.5 बराबर, ये u तो हमें कैलकुलेट करना ही है, तो u इंटू 0.1 प्लस हाफ g वैल्यू इज 10 इंटू 0.1 into 0.1. It is a square, so I have written here 0.1 into 0.1 so that it is easier for me to calculate. Okay, and from here you will get the value like सब जगह से decimal हटा सकते हैं, you can remove the decimals. Okay, so this will be equal to what, 15 is equal to u plus 0.5. ठीक है, सब में 0.1 से डिवाइड कर दिया, और ये तो 10 है, इससे मल्टीप्लाई करके 1 हो गया, तो हाफ तो 0.5, and therefore the value of u will be what, 14.5 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी है ना। ये क्वेश्चन नीट 2020 का था। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. If it hits the ground after some time with a velocity of 50 meter per second, the height of the tower बताना है। ठीक है, कि टावर का हाइट क्या है, और 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लगा लीजिए कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस u स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस as। ठीक है, और v दे रखा है अपने पास, v कितना है 80 मीटर पर सेकेंड, तो 80 का स्क्वायर माइनस u कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर, लगा दीजिए 2 इंटू 10 इंटू एस की जगह पे h लगा लीजिए, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, जस्ट सॉल्व इट। सो इफ यू सॉल्व दिस विल बी व्हाट 1600, नो सॉरी, दिस विल बी 6400 minus 400 is equal to 20h, and from here you will get the value of h, that will be equal to what, 300 meter. Okay, so option B। ठीक है, ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन था। वो पहले वाला अक्टूबर में, और ये जो है वो पहले जो पूछा गया था ना, 2 बार नीट का एग्जाम हुआ था, तो इसलिए 2 अटेम्प्ट। Okay, now next question. See, 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftops of 2 buildings apart, that is 100 meter apart. ठीक है, 2 बिल्डिंग है, बना लेते हैं, एक बिल्डिंग ये रहा और एक बिल्डिंग ये रहा, और इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। ठीक है, एंड हाइट दोनों की सेम है 200 मीटर। 200 मीटर इसकी भी हाइट है और 200 मीटर इसकी भी हाइट है, करेक्ट। सो इट इज गिवन द क्वेश्चन 200 मीटर हाइट इज देयर एंड विद द सेम वेलोसिटी 2 बुलेट को प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये बुलेट 1 है, 25 मीटर पर सेकेंड। ये केस आप प्रोजेक्टाइल का भी समझ सकते हैं ना, 25 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह की होगी, ये भी इस तरीके से जाएगा, और दिस विल गो दिस साइड। सो हमें बताना है कितने सेकेंड में टकराता है और ग्राउंड से हाइट क्या है। ठीक है, ये h हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड फॉल, फॉल पता कर करके और उसको घटा देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए फॉल एस इस केस में, और फॉर्मूला लगा लीजिए। टाइम के लिए तो कोई इशू ही नहीं है, टाइम तो हमारा हो जाएगा 100 अपॉन जो रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 25 एक का ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए और दिस डायरेक्शन टेक एज नेगेटिव, तो 25 माइनस ऑफ माइनस 25 and time here will you will get 100 upon 50, that is what, 2 seconds. Okay, so this is your time, so for that you won't have any problem. Now how to calculate the displacement, I am doing it here.
सो डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन के लिए हमें फिर से वही लगाना है, s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s को तो हम s ही मान लेते हैं, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 25 मत रख दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो 0 माइनस आप नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का, या पॉजिटिव भी ले लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, और डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेंगे तो प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं माइनस लिख के ही कर लेता हूँ। सो माइनस हाफ इंटू 10, और टाइम हमने निकाल रखा है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, एस जो है वो -20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 मीटर फॉल करता है, तो जो ग्राउंड से हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 20, ठीक है। अब इसको प्लस मत कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, इसको प्लस ही मान लीजिए, नहीं तो आप लोग गलती कर लेंगे। और ये 180 मीटर ग्राउंड से हाइट हो गया, ठीक है ना। वैसे आप इसको गलती करिएगा भी तो आपका आंसर सही आएगा नहीं, क्योंकि 220 मीटर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, ओके। I have taken vertically downward direction as positive, correct? Let's move to the next question. See this question here. A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in time t1. This is t1. And if the elevator is at rest in time t2, okay? So the coin reaches the floor in time t1 if when the elevator is at rest, and when the elevator is moving uniformly, it is time t2, okay? So both the cases, yeah, okay? Whether it is moving or whether it is at rest, that is moving uniformly, not accelerated. Whether it is moving uniformly or whether it is at rest, okay, in each case, the time will be given by this equation, that is what, 2h over g. Just now we have calculated it. When a ball is dropped, what will be the time to reach the ground? So the same case we can apply here. So time will be same. So you can simply write t1 is equal to t2, okay? So there is nothing to discuss here, fine? Now see this question. What is this question? Here we are given that x is equal to what? 8 plus 12t minus t cube, okay, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0, ठीक है। जब velocity 0 हो जाए तो retardation कितना होगा, तो ठीक है। तो पहले velocity निकालिए ना, पहले dx over dt डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको कितना करना है, तो ये हमारा जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये 12 minus 2t स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 3t स्क्वायर, इसको 0 के बराबर पुट कर लीजिए, क्योंकि ये दिया गया है ना कि वेलोसिटी जब 0 हो तो लेट्स पुट इक्वल टू 0, और इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ से -3t स्क्वायर इक्वल टू -12 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू आपको मिल जाएगा +-2 सेकेंड, ठीक है। इस पे वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अब रिटार्डेशन के लिए क्या करना होगा, सब जानते हैं, a इक्वल टू क्या होता है, dv over dt, कैलकुलेट कर लीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको -60 दे देगा, है ना। तो t की वैल्यू रख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो रिटार्डेशन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ऑप्शन बी। ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन था। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए सब नीट में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस इज वेरी इजी टू सॉल्व, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेंस 2011. The question here is what? A particle covers half of its total distance with a speed v1 and rest half distance with a speed v2. Its average speed है, ठीक है। तो ये केस तो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है ना। पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा होगा, हमने बताया आपको कि अगर इक्वल इंटरवल में कोई जर्नी करता है तो उसका आंसर क्या लिखना है, तो आप सबको पता है, आप हमें बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा, ठीक है। 2v1 v2 upon v1 plus v2, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्या है, a car moves, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि a car moves x to y with an uniform speed vy, ठीक है, और returns to x with an uniform speed vd, ठीक है। तो द एवरेज स्पीड फॉर राउंड क्या होगा, एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगा, तो कुछ नहीं, एवरेज स्पीड क्या होगा भाई, तो एवरेज स्पीड का क्या है, अभी तो किया था पिछले वाले केस में, है ना। 2vdbu सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। देखिए यही क्वेश्चन एवरेज स्पीड से इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, अभी हमने पिछले स्लाइड में केस डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो सेम केस है, डिस्टेंस सेम है,
तो आप सिंपली इसको HM लगा दीजिए स्पीड का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी क्या दे रखा है कि 2 कार्स है ना, 2 गाड़ी है और पोजीशन दे रखा है यहाँ पर, 2 गाड़ी का पोजीशन दे रखा है और क्या पूछा है हमसे, है ना, हमसे ये पूछ रखा है कि कितने टाइम के बाद ना दोनों गाड़ी की सेम वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा इसका, एनीवन? तो कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी निकालिए, इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। सो लेट्स फाइंड वीपी टी और उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। dxp t upon dt, डिफरेंशिएट कीजिए, पुट just differentiate it. If you will differentiate the equation, here the equation given to us is at plus bt square. If you will differentiate it, this becomes a plus 2bt, right? And for q, it will be what? dx qt over dt. And then if you will differentiate it, this becomes what? F minus 2t, right? Just equate these two since it is given in the question. So just equate these two. I am just equating it. Since Vpt is equal to Vqt, just equate the value, you will get the result. So a plus 2bt is equal to what? F minus 2t, and just solve it. If you solve this, you will get the value like this. You have to find the value t, so just take t one side. So I can take right like this. This becomes 2b, or 2 you can also take it common. This will be what? B plus 1 is equal to what? F minus a, and therefore t will be equal to what? F minus a over 2 into b plus 1. Okay. So which option? The D, right? This question was asking NEET 2016. So as you can see, the questions that are asked from this chapter are very simple. Just you have to learn the basics. Okay. If you know the basics, you can easily answer any questions that are asked in this question. Now see this question: if a velocity of a particle is given to us and the distance traveled is asked between 1 to 2 seconds. So just integrate it. That's it. Velocity is given to us, that is what? At plus bt square, and we know that ds over dt is equal to what? At plus bt square, and this implied ds will be equal to what? At plus bt square into dt. Integrate both sides. Okay, integrate both sides, and if you will integrate it, 0 to s. Okay, now one problem is here. What is the problem here is that we have to find the time interval is given to us. If the time interval is not given, please be careful. Okay, while doing indefinite integrals, we have to put a integration constant, but here we are given a time interval, so there is no issue with that. So we have to integrate it from t is equal to 1 to t is equal to 2 सेकेंड, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा s बराबर क्या हो जाएगा? 80 को इंटीग्रेट करेंगे तो 80 का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा? 80 स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा BTQ अपॉन 3, ठीक है। और ये हो जाएगा t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2। वैल्यूज रख दीजिए, एक बार 2 रखेंगे तो ये 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 से कैंसिल करेंगे तो वो ट्वाइस a, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 8/3। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ना, 8/3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा a/2, और यहाँ पे रखेंगे 1 तो आपको मिल जाएगा b/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जो वैल्यू मिल जाएगी, ये ट्वाइस में से a/2 गया तो कितना बचा? 3/2, और 8b/3 में से b/3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7b/3। सो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं फटाफट। Let's see this question. The displacement x is in meter of a particle. Mass is given to us, one dimensional, under the action of force is related to time t, and the time is given like this, ठीक है। यहाँ पे अब समस्या क्या है, जो हमें टाइम का इक्वेशन दे रखा है ना, t इक्वल टू व्हाट? √x + 3, ठीक है। टाइम का इक्वेशन दे रखा है, तो बस इसका थोड़ा ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार मिस्टेक हो जाती है। What we are asked is that displacement of the particle when its velocity is 0, ठीक है। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, कोई बता सकता है? हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन?
Anyone? How can we solve this question? ठीक है, देखिए इसको करना कुछ नहीं है. What they have asked us is that कि इसका जो पार्टिकल होगा है ना, वेलोसिटी 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए ना, इसको क्या कीजिए, जस्ट स्क्वायर बोथ साइड्स. ओके, सो आप ऐसा कर लीजिए, रूट एक्स will equal to what, t minus 3, and if you will square this will equal to what, t minus 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी will be what, dx over dt, and if you will differentiate this to find the velocity, the value you will get will equal to what, I'm just writing, it will be 2 into t minus 3 and just put it equal to 0. From here you will get the value of t, that will equal to what, 3 seconds. Okay, and at t is equal to 3 seconds, okay, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. बात समझ में आ रही है? So second option correct. Let's move to the next question. See here, a particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to this relation. Okay, this relation is given to us. Vx is equal to what, बीटा x to the power minus 2 है ना, ये रिलेशन वी आर गिवन. ठीक है, बीटा एन कांस्टेंट है, x पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, तो हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. इसके लिए हम क्या जानते हैं, पहले देख लीजिए. a is equal to what you know is dv upon dt, और अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है तो हम ये लगाते हैं dv upon ds. ठीक है, तो निकाल दीजिए फिर, है ना. therefore a will be equal to what, v dv over dx, क्योंकि x का फंक्शन इसलिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं और फटाफट वैल्यू लिख लेते हैं. तो लिख लीजिए, इसमें कुछ ऐसा अब रहा नहीं है ना, इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो v तो कितना है हमारे पास, बीटा x to the power minus 2n, और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये बीटा तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x to the power minus 2n का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, minus 2n, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, into x to the power minus 2n minus 1. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई आप करके एडजस्ट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, minus 2n बीटा स्क्वायर, बीटा बीटा मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, एंड ये क्या है, x to the power minus 2n minus x to the power 2n minus 1 है ना. तो जो वैल्यू तुमको आपको मिलेगी वो कितना हो जाएगा, x to the power minus 4n minus 1. ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, minus 2n बीटा स्क्वायर x to the power minus 4n minus 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा. करेक्ट. क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है. प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला. The questions that are asked here is very simple ones. Okay, now see this question here. A particle moves a distance x in time t according to the equation x is equal to t plus 5 to the power minus 1. The acceleration of the particle is, क्या होगा, what is the acceleration of the particle? तो इसको क्या करना है, we have to differentiate it. Just differentiate it and you will get the result. So just see, we can write is what, dx over dt, and if you will differentiate the value, you will get the value like this, minus t plus 5 to the power minus 2. And let's find acceleration 2. It will be what, dv over dt, and that will be what, 2. Now it is plus, so minus minus plus, so I'm writing 2 over t plus 5 to the power minus 3. Okay, ठीक है, t plus 5 to the power minus 3 हो गया. अब यहाँ पे आप देख लीजिए वेलोसिटी कितनी है, t plus 5 to the power minus 2 है, और जो एक्सेलरेशन है वो t plus 5 to the power minus 3 आ गया. ठीक है, so what we can write here is that, अभी डिस्टेंस का तो कुछ इसमें है नहीं, है ना, हमको एक्सेलरेशन बताना है, तो डिस्टेंस का वैल्यू से तो कुछ नहीं आएगा. ठीक है, डिस्टेंस का क्यूब कहीं नहीं दिया गया है, डिस्टेंस का -2 है और ये है, तो ठीक है, इट मींस व्हाट, वी कैन सिंपली राइट लाइक दिस विल इक्वल टू व्हाट, -2, जस्ट सी हियर, -2 v to the power 3 over 2. ठीक है ना, अभी ये आ गया t plus 5 की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस v to the power स्क्वायर हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो ये -3 over माइनस प्लस हो जाएगा और 3 over 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी का पावर 3/2 का प्रोपोर्शनलिटी पूछा गया, तो यू कैन सिंपली आंसर द फर्स्ट ऑप्शन. करेक्ट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, a ball is thrown vertically downward with a velocity 20 meters per second from the top of a tower. It hits the ground after some time. Yes, this we have done. The answer was
300 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस। और डिस्टेंसेस हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो मैंने आपको बोला था रेशियो क्या लिखना है, h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h3 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1:3:5। ओके, ठीक है, तो ये रेशियो लगाना है, 1:3:5 हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इफ यू नो दैट शॉर्टकट यू कैन इजीली आंसर दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy is standing at the top of a tower of 20 meter height, drops a stone assuming g the velocity with which hits the ground। so अभी हमने इसका शॉर्टकट लिखा था, v इक्वल टू व्हाट, √2gh, पुट कर दीजिए वैल्यू 2 × 10 × 20 और ये कितना हो जाएगा, ये √400, दैट इज व्हाट 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ऑप्शन बी। सो the questions that are asked here is very simple ones। okay, ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो बहुत सिंपल्स होते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, आपको कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल क्वेश्चंस है, इसको इजीली आप आंसर कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं और फिर हम इस सेशन को रैप अप कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन है, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाफ ऑफ द हाइट 10 मीटर पर सेकंड है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। हमें ऑप्शंस दिया गया है 8 मीटर, 20 मीटर, इस तरीके से हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं क्या आंसर होगा इस केस में, एनीवन। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो आप इसको क्या करें ना, डायरेक्ट वीडियो से मत देखें, आप इस वीडियो को देखिए, कुछ से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, अभी इसमें क्या देखना है, तो मैं 10 मीटर पर सेकंड हाफ पे दे रखा है। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें हाफ पे दे रखा है, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, US स्क्वायर माइनस 2GH/2। ठीक है, और ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, और जब मैक्सिमम पे चला जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, US स्क्वायर माइनस 2GH, और रेशियो ले लीजिए। ठीक है, जस्ट टेक द रेशियो एंड यू विल गेट योर वैल्यू। और या रेशियो नहीं लेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, इससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए ना। सो ये दोनों ही केसेस में द वैल्यू यू विल गेट विल इक्वल टू व्हाट, h इक्वल टू व्हाट 10 मीटर। ठीक है, ऐसे 10 मीटर यू विल गेट द हाइट। ओके, सो ऐसे बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, आप इसकी और थोड़ी प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस दैट यू आर गेटिंग हियर इज वेरी सिंपल वंस। ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। Okay, so that's all for today. Thank you for attending this lecture. That's all.